मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई चूहा आ गया है और वो मेरा बुक्स काटने की कोशिश कर रहा है। शुभम छुरपी खाया है? छुरपी होता है ना वो वाला। नहीं खाया है? किस्मत से तो ना वो नॉर्थ ईस्ट आ गया ना, तो खा लेना। हाय बोरा। मेरे पीसी में एक लड़की थी, उसका नाम था लीजा बोरा। और मेरे कॉलेज में एक स्टूडेंट थी, क्लासमेट, उसका नाम था निशा बोरा। बोरा बोरो था, बोरो। आई डोंट नो, बोरो ट्राइब से थी शायद वो निशा। नाइस। चलो पढ़ते हैं। ये स्लॉट 3 का ना 10 मिनट बचा है, वो पहले कंप्लीट कर लेते हैं ना। मैंने कॉफी अभी अभी पी लिया है, फिर भी मेरा दिल कर रहा है कि फिर से पीऊं, फिर से पीऊं। दिखा भी रही हूँ कैसे पीना है। वैसे अब इतना देर तक पढ़ना ही है तो शुभम पढ़ाई होने से पहले एक बार गा दे भाई। गाना गा दे कोई सा, सब लोगों को एंटरटेनमेंट मिलनी चाहिए। 1 2 3 स्टार्ट। जल्दी गा लेकिन, ठीक है। सुन रहा? हाँ सुन रही हूँ। आगे का। बस इतना ही। ये ले, एक स्टिकर भेज दिया तेरे को। अब क्या, अब नाच दे, 2 ठुमका लगा दे। ठुमका लगा दे, वैसे कोई देखेगा भी नहीं तुझे। फिर पढ़ाई करते हैं। यो अंश, यो, यस यो। मेरी उंगली कितने छोटे छोटे लगते हैं ऐसे करने से। एक्सक्यूज मी, व्हाट आर यू स्टडीइंग फॉर? आई ऑल्सो डोंट नो अंश। ये चैप्टर फिर से एक बार कर लेते हैं। Cool, have a good day. You too have a good day. लाला, हाय लाला। लाला लैंड।
सोने जाती हूँ ना, एकदम फ्रेश हो जाती हूँ, खुशी खुशी से नाचने लगती हूँ। फिर जब पढ़ाई करने बैठती हूँ ना, फिर मेरा बॉडी का टेम्परेचर आपने वो क्या बोलते थे, ऑटोमेटिकली ना हाई होने लगता है। एनवायरमेंटल इशू, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन है। हाई कंफर्ट जोन, मुझे भी कंफर्ट जोन में ही रहना है। रहना नहीं है, रहना चाहती हूँ। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी तक है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन नहीं, इसका तो कुछ रिमूव नहीं किया है ना हमारे ना। निमोनिक सुन के पढ़ती हूँ। गुड आफ्टरनून बाबा रामदेव। हाय राजू। राजू साम, नहीं उसका नाम श्याम नहीं है, उसका नाम घनश्याम है शायद। किसी ने हेरा फेरी, क्या हीरा फेरी या फिर हेरा फेरी ऐसा कुछ है एक मूवी, टॉयलेट, जिसमें टॉयलेट को संडास बोलते हैं। चलो स्टार्ट करते हो के बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। फिजिक्स वाला फिर फिजिक्स। हाँ अभी अभी जेनेटिक लेवल पे अपने को 3 चीजें पढ़नी है। एक राउ वुल्फिया, क्या थंबा, क्या किसकी तैयारी कर रहे हो, तू भी थंबा लेके आ राजू। ओके मैं ऑफ कर देती हूँ, ओके या फिर ऐसा कर देती हूँ, लो। ओके एग्जाम आफ्टर 2 days, तो पढ़ो पढ़ो ठीक है। आई थिंक यहाँ पर तो सिर्फ पढ़ेगा शुभम ही। गुड लक शुभम। SP
कोई भी पढ़ रहा है तो उसको भी गुड लक। हाँ, मैं वीडियो देख लेती हूँ। वोमिटोरिया, एक अपने को राइस पढ़ना है, एक अपने को मैंगो पढ़ना है। देखो जो राउ वोल्फिया वोमिटोरिया प्लांट है वो एक केमिकल को सीक्रेट करता है जिसका नाम क्या है, रेजर पाइन है। अब रेजर पाइन के बारे में बताया गया है कि हिमालय की अलग अलग जगह पे रेजर पाइन की जो पोटेंसी है या कंसंट्रेशन है वो अलग अलग पाई जाती है। नेक्स्ट राइस के बारे में बताया गया है कि भारत देश में राइस की कितनी स्ट्रेन पाई जाती है, 50,000 स्ट्रेन पाई जाती है। नेक्स्ट मैंगो के बारे में बताया गया है कि भारत देश के अंदर मैंगो की कितनी वैरायटीज पाई जाती है, 1,000 वैरायटीज पाई जाती है। नेक्स्ट स्पीशीज डाइवर्सिटी में देखें तो इसमें क्या लिखा गया है कि वेस्टर्न घाट के अंदर ईस्टर्न घाट के कंपैरिजन में एम्फीबियंस की ज्यादा स्पीशी डाइवर्सिटी पाई जाती है। नेक्स्ट हम इकोलॉजिकल लेवल पे देखें तो इसमें सिंपल सी बात बताई गई है कि इंडिया जैसी कंट्री है ना, जहाँ पे सर्दी भी होती है, बारिश वाला क्षेत्र भी है, मतलब है ना, मेघालय मणिपुर साइड चले जाओगे ना, चेरापूंजी चले जाओगे, गर्मी वाला भी है, राजस्थान है, केरल में अलग टेम्परेचर है ना, मतलब क्या है, पहाड़ भी है, हिमाचल में अलग अलग क्या है एरिया है, अलग अलग टेम्परेचर है, कंडीशन है, तो बहुत ज्यादा वहां पे क्या है बायोडाइवर्सिटी अपने को देखने को मिलती है। जैसे नॉर्वे जैसी कंट्री है, वहां पे इतने चेंजेस नहीं पाए जाते, तो वहां पे बायोडाइवर्सिटी भी कम होती है। नेक्स्ट हम टोटल स्पीशीज की बात करने वाले हैं, तो अकॉर्डिंग टू IUCN इसके अनुसार कितनी है, 1.5 मिलियन टोटल स्पीशी है। और रॉबर्ट मे के अनुसार कितनी है, 7 मिलियन है। रॉबर्ट मे ने क्या बोला है कि भाई है तो 7 मिलियन, बट हम डिस्कवर सिर्फ इतनी कर पाए हैं। अब आप लोग IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है, तो IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट हम बात करें, देखो टोटल जितनी भी स्पीशी है ना उसमें से 70% कौन है, एनिमल्स हैं, और टोटल एनिमल्स की बात करें तो उसमें से 70% कौन है, इंसेक्ट्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करने वाला है, ये अपने एनसीईआरटी के दिए हुए हैं, ये अपने एनसीईआरटी के दिए हुए हैं, ये इनवर्टिब्रेट्स के बारे में है, इनवर्टिब्रेट्स के बारे में है ना। अब इसकी ट्रिक तो मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, आई एम क्रस्टेशियन। ठीक है, आई यानी इंसेक्ट आ गया, एम यानी मोलस्क आ गया ना, आई एम, और ये क्रस्टेशियन आ गया, और यहाँ पे तो अदर एनिमल ग्रुप आ जाएंगे। और इसकी मैंने क्या ट्रिक बताई है, देखो हम एनिमल किंगडम जब चैप्टर पढ़ते हैं तो सबसे पहले है ना फ्लो कैसे अपना, सबसे पहले हम फिश के बारे में पढ़ते हैं, कॉन्ट्रैक्टीज, ऑस्ट्रिकीज, फिर हम क्या पढ़ते हैं, एम्फीबिया पढ़ते हैं, फिर हम क्या पढ़ते हैं, रेप्टाइल पढ़ते हैं, फिर हम बर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं, फिर लास्ट में हम मैमल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो यही फ्लो पकड़ना है। देखो F4 ये फिश आ गया, फिर एम्फीबियन आ गया, ठीक है, फिर कौन आ गया, रेप्टाइल आ गया, फिर कौन आ गया, बर्ड्स आ गए, फिर कौन आ गया, मैमल्स आ गया। तो ये ऑटोमेटिक अपना याद हो गया। ठीक है, तो इसकी मैं क्या ट्रिक बताता हूँ, एक तो फैन बताता हूँ, एक तो क्या बताता हूँ, फैन, है ना, ये F यानी फंजाई हो जाएगा, एन यानी ये एंजियोस्पर्म हो जाएगा। ठीक है, और इधर देखो जो लाइकन होता है, जो लाइकन होता है इससे मिलके बना होता है एल्गी और फंजाई से। तो फंजाई तो यहाँ आ गया, तो इसके साथ कौन होना चाहिए, एल्गी होना चाहिए। और मोस क्या होते हैं, ब्रायोफाइट होते हैं, फर्न्स क्या होते हैं, टेरिडोफाइट होते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट तो भाई भाई हैं, तो इनको साथ में आपको रखना ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम इंडिया की बात करने वाले हैं कि भारत देश में क्या क्या पाया जाता है। तो भारत देश की जो पूरी दुनिया की अगर एरिया की परसेंटेज लगाएं तो 2.4% है, जबकि स्पीशी की परसेंटेज लगाएं तो भारत देश की कितनी परसेंटेज है, 8.1% है। और एनिमल्स की स्पीशी कितनी है भारत देश में, 90,000 है। और प्लांट्स की लगभग इससे हाफ लिखी हुई है एनसीईआरटी में, कितनी, 45,000 है। और राइस की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, कितनी है, 50,000 है। और मैंगो की कितनी है, 1,000 वैरायटी है ना। इसीलिए देखो अब भारत देश में इतनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जा रही है, इसीलिए भारत को किसमें 12 जो मेगा डाइवर्सिटी कंट्री है। देखो मेगा मतलब क्या होता है, ये क्या हो गया, मेगा मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा, है ना। डाइवर्सिटी मतलब ऐसी कंट्री जिसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है, तो उसमें भारत देश को शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इसमें दो चीजें अपने को पढ़नी है, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स एंड स्पीशी एरिया रिलेशनशिप। लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट में क्या है, देखो इसमें सिंपल सी बातें बताई गई हैं, घूम फिर के वही बातें आएंगी। देखो जो ये होता है, मान लो ये अपनी अर्थ है, अब ये क्या हो जाएंगे, पोल हो जाएंगे, ये पोल हो जाएंगे, और बीच में कहीं इक्वेटर आएगी। तो इसमें बात क्या की गई है कि इक्वेटर के ऊपर अच्छी धूप आएगी, अच्छी सनलाइट आएगी, तो यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी ज्यादा होती है, प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। और जैसे जैसे आप इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, पोल्स की तरफ मूव करेंगे, तो क्या है, बायोडाइवर्सिटी घटती आ जाएगी, कम होती आ जाएगी। तो वही बातें बताई गई है कि इक्वेटर पे क्या है, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, पोल्स पे कम होती है। ठीक है, अब इक्वेटर पे जो फॉरेस्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होते हैं। तो जाहिर सी बात है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में क्या पाई जाएगी, है ना, टेम्परेट के कंपैरिजन में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी।
ठीक है। और इसके घूम फिर के वही बातें आएंगी कि ट्रॉपिकल में बायोडाइवर्सिटी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है ना। ईयर टू ईयर वेरिएशन यहाँ पे कम पाई जाएंगी, है ना। डिस्टर्बेंस यहाँ पे कम पाई जाएगी, यहाँ पे स्पीशीज को बनने के लिए टाइम अच्छा मिला है, स्टेबिलिटी है। यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, तो वही सारी बातें यहाँ पे घुमा फिरा के बार बार लिखी गई है। नेक्स्ट हम ये देखने वाले हैं क्या स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। इसमें क्या है, सबसे पहले अपने को साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट ने दिया था और ये वाला ग्राफ दिया था। अब इस वाले ग्राफ पे देखो, ये है स्पीशी रिचनेस, ये है एरिया। याद आपको क्या रखना है कि ये ग्राफ कैसा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और ये z क्या होती है, यहाँ पे z अपनी स्लोप होती है। और स्लोप की बात करें अगर, तो ये नॉर्मल एरिया की पूछी जाए, है ना, ठीक ठाक एरिया की पूछी जाए तो स्लोप की ये वैल्यू रहती है। बट एनसीईआरटी में लिखा, अगर बहुत बड़ा एरिया ले लिया जाए, बहुत बड़ा एरिया जैसे पूरा कॉन्टिनेंट की हम बात करें ना, एंटायर कॉन्टिनेंट, तो z की वैल्यू भी क्या है, ज्यादा हो जाती है, मच स्टीपर यानी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट ये फ्रूगीवोर बर्ड, यहाँ पे ये लिखा है ना, फ्रूगीवोर बर्ड में z की वैल्यू कितनी होती है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 1.15। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशी डाइवर्सिटी। वही बात है कि ज्यादा स्पीशी होंगी, ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, तो उस एरिया में क्या है, स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अब स्टेबिलिटी क्या है, वही बातें मैंने बोली थी ना घुमा फिरा के, कि है ना, ईयर टू ईयर वेरिएशन कम आएंगी, डिस्टर्बेंस कोई आएगी तो उसको झेलने के काबिल होगी, है ना। कोई बाहर से स्पीशी आ जाती है, एलियन स्पीशी आ जाती है, तो उसको झेलने के काबिल होगी, है ना, स्टेबिलिटी घूम फिर के वहीं आके टिक रही है। डेविड टिलमैन ने भी कुछ ऐसी ही बात बोली है ना, कि जिस एरिया में ज्यादा स्पीशीज होंगी, मतलब ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, उसमें क्या है, ईयर टू ईयर वेरिएशन कम आएंगी और वहां की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो मैंने बोला था ना, वही घूम फिर के बातें आ रही है। ठीक है। नेक्स्ट है रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस। किसने दिया था, सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखिए, पॉल एरलिच ने। देखो उन्होंने क्या बोला था कि ये पूरा एरोप्लेन जो है ना, ये पूरा एरोप्लेन जो है, ये एक इकोसिस्टम है। और जो इकोसिस्टम, देखो इसमें ये पेंच लगे हुए ना, एरोप्लेन में पेंच लगे हुए, इन पेंचों से तो जुड़ा हुआ है, ये पूरा पेंचों से जुड़ा हुआ है। तो जो पेंच लगे हुए हैं, ये क्या है, ये क्या है, उसकी स्पीशी है पूरे इकोसिस्टम की। और देखो सबसे जरूरी पेंच अगर इसमें पूछ लिया जाए तो कौन से हैं, जो पेंच पंखों पे लगे हुए हैं, जो राइवेट्स पंखों पे, विंग्स पे लगे हुए हैं, वो सबसे जरूरी है, यानी राइवेट्स ऑन विंग्स क्या हो जाएंगी, इंपॉर्टेंट स्पीशी हो जाएंगी। अब मान लो इस जहाज में से एक सवारी उतरी और एक राइवेट यानी एक पेंच को उतार के ले गई, दूसरी सवारी उतरी एक पेंच को ले गई, तीसरी सवारी उतरी एक पेंच को ले गई। हाँ, तो जैसे 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 इसके पेंच गुम होते जाएंगे, यानी इसकी स्पीशी खत्म होती जाएंगी, धीरे धीरे एरोप्लेन यानी इकोसिस्टम भी खत्म हो जाएगा। और क्या याद रखना है कि जो जो राइवेट विंग्स पे है यानी इंपॉर्टेंट स्पीशी है, उसका ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, है ना, इकोसिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। तो बायोडाइवर्सिटी के, है ना, कितने कॉज दिए हुए हैं, 4 कॉज दिए हुए कि ऐसे क्या रीजन है जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दूसरा है ओवर एक्सप्लॉइटेशन, तीसरा है एलियन स्पीशी इन्वेजन, फोर्थ है को एक्सटिंक्शन। अब इसमें से आपसे चारों में से पूछ लिया जाए कि मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज कौन सा है, नीट में पहले पूछा भी गया है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज है। तो हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज है। ठीक है। और इसका क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कैसे दिया हुआ है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, वो पहले कितने होते थे, मोर देन 14% होते थे, पर हम जंगलों को काटते जा रहे हैं तो वो 6% रह गए हैं। और क्या बोला गया है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट है ना, जो अमेजोन के जंगल है, उनको लंग्स ऑफ द प्लैनेट बोला गया है। क्यों बोला गया है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमें देते हैं। ठीक है। और क्या बोला गया है, अमेजोन रेन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है, इसलिए काटा जा रहा है सोयाबीन की खेती के लिए और गाय भैंस को चराने के लिए काटा जा रहा है। नेक्स्ट हम ओवर एक्सप्लॉइटेशन की बात करें। ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब है ना, कि जितना हमने को शिकार करना चाहिए था, हमने लालच में आके उससे ज्यादा कर दिया, मतलब जब जरूरत लालच में बदल जाए उसको बोलते हैं ओवर एक्सप्लॉइटेशन। और इसकी वजह से क्या एक्सटिंक्ट हो गया है, एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है, स्टीलर सी काऊ एंड पैसेंजर पिजन इसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट हम एलियन स्पीशी इन्वेजन की बात करने वाले हैं। एलियन स्पीशी, देखो एलियन मतलब कोई स्पीशी बाहर से आ गई, है ना। मान लो मेरे गांव का तालाब था, है ना, मेरे गांव के तालाब में मान लो ए नाम की मछली रहती थी। अब मैं कहीं बाहर से अफ्रीका गया और बी नाम की मछली ले आया, बी नाम की मछली सुपीरियर थी, उसने ए नाम की मछलियों को, है ना, बर्बाद कर दिया। तो यही यहाँ पे कहानी है। तो इसमें करना क्या है, देखो देखो नाइल पर्च ने किसको एक्सटिंक्ट कर दिया था, 200 स्पीशी ऑफ किकलेड फिश को एक्सटिंक्ट कर दिया था। अफ्रीकन कैटफिश ने अपनी इंडिजिनस कैटफिश को क्या कर दिया था, एक्सटिंक्ट कर दिया था। हाँ, एलियन स्पीशी है ये। ठीक है। और ये है जैसे कि कैरेट ग्रास है, आपको पता ही है, कैरेट ग्रास, कांग्रेस ग्रास बोलते हैं, पार्थेनियम लैंटना, वाटर हायासिंथ, ये सब क्या है, नेटिव स्पीशी। किसी भी एरिया में अगर ये आ जाए तो वहाँ की नेटिव स्पीशी को उड़ा के खुद ही खुद फैल जाते हैं। को एक्सटिंक्शन मतलब तू गया तो मैं भी गया, है ना, मतलब एक, है ना, गहरा प्यार का संबंध है यहाँ पे, है ना, काफी दिलनुमा बातें की गई है। ये वैसे वहां पे आता है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पे, वहां पे पता चलेगा। फिर ओब्लिगेटरी पैरासाइट मतलब कोई पैरासाइट था जो, है ना, कोई पैरासाइट अगर था, अरे यार
कलर 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 कलर, ठीक है। मान लो कोई पैरासाइट था, वो ए नाम की फिश पे ही रह सकता था। अब ए नाम की फिश जब उड़ जाएगी तो जाहिर सी बात है उस पैरासाइट को भी उड़ना पड़ेगा ना, ऑब्लिगेटरी, मतलब मैं तेरे बिना नहीं रह सकता, या रह सकती भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो ये जो है ना, ये दिए हुए हैं, इनको याद करने की खास आपको जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में लिखे गए हैं, पर मैं बोल रहा हूँ इनको याद करने की खास आपको जरूरत नहीं है। अब यहाँ से ध्यान आपको बस ये रखना है, सिक्स्थ एक्सटेंशन जारी है, मतलब 5 मास एक्सटेंशन हो चुके हैं, जैसे डायनासोर ने एकदम खत्म हो गए थे वो वाला एक्सटेंशन, तो अभी सिक्स्थ वाला जारी है। और सिक्स्थ वाले में खास बात क्या है कि ह्यूमन की एक्टिविटीज इतनी बढ़ चुकी है कि सिक्स्थ वाला बहुत ज्यादा स्पीड से आ रहा है। मतलब क्या बोला गया है एनसीईआरटी में कि अगले 100 सालों में हम अपनी आधी स्पीशी क्या है गवा देंगे, खत्म कर देंगे। और ये स्पीशी एक्सटिंक्ट हो चुकी है, जैसे कि डोडो कहां से एक्सटिंक्ट हुई, मॉरिशस, डोडो 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 डोडो, वागा कहां से, अफ्रीका से, थाईलासिन कहां से, ऑस्ट्रेलिया से, स्टीलर सी का वहां से, रशिया से, और सब स्पीशी ऑफ टाइगर का ये है, इनकी जगह नहीं दी हुई, इनका नाम क्या है, बाले जाऊन कैसे, ये सब स्पीशी है टाइगर की, ये भी एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब हम बात करने वाले हैं व्हाई डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, मतलब हमें बायोडाइवर्सिटी को आखिर क्यों कंजर्व करना चाहिए। जाहिर सी बात है हमें उनसे बहुत फायदा हो रहा है, इसीलिए हमें क्या है कंजर्व करना चाहिए। तो फायदा किस तरीके से हो रहा है, नैरो तरीके से भी, ब्रॉड तरीके से भी, एथिकल तरीके से। अब नैरो तरीके में तो वही आ जाएगा, पेड़ पौधों से हमें खाना मिलता है, लकड़ियां मिलती है, फाइबर मिलते हैं, डाइज मिलती है, दवाइयां मिलती है, ड्रग्स मिलती है, वो सब आ जाएगा। और नैरो में क्या आएगा, बायो प्रोस्पेक्टिंग आएगा। बायो प्रोस्पेक्टिंग वही होता है ना, मैंने बार बार एग्जांपल बताता हूँ, मान लो साउथ अफ्रीका में ये प्लांट है ना, ये प्लांट है अजीब सा, साउथ अफ्रीका में है, और इसमें क्या प्रॉपर्टी है, ये कैंसर को ठीक कर सकता है। अब साउथ अफ्रीका है ना, अफ्रीका ही ले लो, अफ्रीका के जंगलों में है, तो अफ्रीका के जंगलों में ये प्लांट है, इसमें कैंसर को ठीक करने की प्रॉपर्टी है, बट वहां के लोग पढ़े लिखे नहीं है, तो इनको इसकी पावर नहीं पता। तो इसमें यही बोला गया कि भाई जो यूजफुल है ह्यूमंस के लिए, है ना, उसका अच्छे तरीके से यूज किया जाए, साइंस का यूज करें, ठीक है। इसकी जड़ को मिटा लेते हैं, बहुत ही गंदा लग रहा है प्लांट को, ठीक। अब देखो ब्रोड में क्या आएगा, ब्रोड की मैं ट्रिक बताता हूँ, P2 यानी P फॉर पोलिनेशन, P फॉर फोटोसिंथेसिस, ये मैं बताता हूँ। और ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट को हमने बोला था ना लंग्स ऑफ द प्लैनेट, क्यों बोला था, क्योंकि टोटल ऑक्सीजन की 20% ऑक्सीजन अमेज़न रेन फॉरेस्ट से आती है। नेक्स्ट इथिकल में क्या आ जाएगा, इथिकल में ये नहीं आएगा, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। इथिकल में आएगा फॉर एग्जांपल आप है ना, आपकी कोई है या आपका कोई है और आप प्लानिंग कर रहे हो फोन पे आप बात करते हुए कि यार पोल्यूशन बहुत हो रहा है, तो हमें क्या है ना, नेचर, पेड़ पौधों को बहुत काटा जा रहा है, तो हमें पेड़ पौधों को, नेचर को बचाना चाहिए। हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, है ना, वो क्या करेंगे फिर, आने वाली पीढ़ी की अपने को टेंशन हो रही है ना, प्यार भी हो रहा है, टेंशन भी हो रही है, ठीक है। तो जरूर किया करो ये वाली टेंशन जब आप बतियाते हो किसी से, ठीक। तो नेक्स्ट है हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। हमने ये तो देख लिया कि बायोडाइवर्सिटी है, अपने को इतना सारा फायदा हो रहा है, तो मतलब क्या है, सीधा सीधा भाई बचाना तो चाहिए। बचाना कैसे चाहिए, इन सिटू या एक्स-सिटू तरीके अपने पास होते हैं। इन सिटू यानी ऑन साइड, मतलब है ना, शेर जंगल में है और मैं जंगल में गया, मैंने वहीं पे चार दीवारी कर दिया, तार लगा दिया, उसके कारण होता है। एक्स-सिटू यानी ऑफ साइड, ऑफ साइड यानी मैं जंगल में गया, है ना, गाड़ी लेके गया, वो गाड़ी में शेर को बिठा लाया अपने साथ साइड वाली सीट पे, और मैंने आके दिल्ली के चिड़ियाघर में उसको छोड़ दिया कि भाई तेरे को प्रोटेक्ट यहाँ पे करता हूँ, वहां तेरे को खतरा था। तो इन सिटू में क्या क्या आएंगे अपने पास, हॉटस्पॉट्स आएंगे, बायोस्फीयर रिजर्व आएंगे, नेशनल पार्क आएंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आएंगी, सेक्रेड ग्रुप्स आएंगे। अब यहाँ पे इनके नंबर आपको हर हाल में याद होने चाहिए। ये इंडिया की बात की गई है, भारत देश में कितने हॉटस्पॉट, 3 है, बायोस्फीयर रिजर्व कितने हैं, 14 है, एंड नेशनल पार्क 90 है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितनी है, 44 है, ठीक है। अब सेक्रेड बायोस्फीयर 90 नेशनल पार्क, 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज।
ग्रुप्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा क्या होते हैं, टेंशन मत लीजिए। देखो हॉटस्पॉट की बात की है कि हॉटस्पॉट इतने जरूरी क्यों होते हैं। देखो पूरी दुनिया की बात की गई है कि हॉटस्पॉट 25 होते थे, 25 होते थे, अब बढ़ के कितने 34 हो चुके हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में हॉटस्पॉट 3 है। कौन से 3 है? इंडो बर्मा, हिमालय एंड वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। अब हॉटस्पॉट की खास बात क्या होती है? यहाँ पे स्पीसी रिचनेस मतलब बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म। एंडेमिज्म का मतलब है फॉर एग्जांपल राहुल जो है वो कानपुर में ही पाया जाता है, या प्रियंका जो है वो भोपाल में ही पाई जाती है, ये होती है एंडेमिज्म। ठीक है। अब हॉटस्पॉट की खास बात क्या है? जो एरिया कवरेज है ना, ये सिर्फ 2% एरिया लेते हैं, ये सिर्फ दुनिया का 2% एरिया लेते हैं, बट स्पीशी रिचनेस इनकी बहुत ज्यादा है। तो क्या बोला गया है, अगर हॉटस्पॉट को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए तो जो ऑनगोइंग मास एक्सटिंक्शन है उसको ये 30% तक रोक सकते हैं। ये कुछ नेशनल पार्क कहाँ पे है ये याद रख लेना, है ना। जैसे ये कई बार पूछते जाते यार, इंपॉर्टेंट वाले, इसलिए मैंने लिखे हैं। जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे है? असम में है, और किस लिए फेमस है? ये राइनोसोरस के लिए। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है, टाइगर के लिए फेमस है। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, लोयन के लिए फेमस है। सेक्टर्ड ग्रुप्स की बात करें, है ना, ये क्या है? एक तरीके से ऐसे बोला जाता है, मान लो ये गांव है, और ये गांव जंगल के अंदर है। ये गांव पूरा जंगल के अंदर है, और जंगल के अंदर कुछ भी हो सकता है, मंदिर हो सकता है, मस्जिद, गुरुद्वारा, है ना, या चर्च, कुछ भी हो सकता है। और वहां के लोकल लोग मान रहे हैं कि ये जो जंगल है ना, ये भगवान से जुड़ा हुआ है, ये नेचर भगवान से जुड़ा हुआ है। अगर हम जंगल काटेंगे तो क्या है, भगवान हमसे, है ना, भगवान अल्लाह ईश्वर हमसे नाराज हो जाएंगे। तो इस तरीके से क्या है, फिर उन जंगलों को लोग नहीं काटते हैं। तो ये कहाँ कहाँ पे है? खासी एंड जयंतिया हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटक एंड महाराष्ट्र, सरगुजा, चंदा एंड बस्तर ऑफ मध्य प्रदेश, फॉरेस्ट ऑफ मेघालय। एक्सिटू कंजर्वेशन की बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा? जूलॉजिकल पार्क आएंगे, बोटेनिकल गार्डन आएंगे, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, सीड बैंक, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक इसमें आएगी। ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के बारे में ये दो चीजें आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखी गई है। अर्थ समिट कब हुआ था? 1992 में। वर्ल्ड समिट 2002 में। और क्या है, ये कहाँ पे हुआ था? अर्थ समिट कब हुआ था? रियो डी जेनेरियो में, है ना, कहाँ? ब्राजील में। रियो कहाँ पे है? ब्राजील में है, सबको पता होना चाहिए। जोहान्सबर्ग कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। तो ये जोहान्सबर्ग में हुआ था। ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चैप्टर बड़ा ही प्यार से खत्म किया। थैंक यू, धन्यवाद। स्लॉट 3 कंप्लीट हो गया। ओके, स्लॉट 4 स्टार्ट करते हैं। हेलो दीदी, बाय द वे आपका नेम बता सकते हो? मेरा नाम जो लिखा है ना चैनल पे वही तो मेरा नाम है। हाय मिलिट्री गेमिंग। पिन नहीं नहीं, वो पता नहीं क्या था उनका नाम, मुझे नहीं पता, फिर से जाके देखना पड़ेगा। ये तो एक ए भी करके कुछ चैनल पे, ए भी नहीं के भी करके था, के वी एजुकेशन। तुम भी जाके देखो। के वी एजुकेशन, हाँ के वी एजुकेशन ही है। जल्दी जल्दी पढ़ा देते हैं, सही भी पढ़ाते हैं। ओके, स्टार्ट करें शुभम? गुड लक एवरीवन। अब कोई टेक्स्ट मत करना, चैट सेक्शन में कुछ भी मत लिखना। ओके ओके, गुड लक ऑल। मोनिक्स,
Trick to learn data and species names in ecology. Biodiversity laws. Vipin Sharma Biology Tutorials. Hello friends and welcome back to another video from Vipin Sharma Biology Tutorials. Now we are going to talk about a very important topic with the help of some tricks, and I know very well that in each and every year you will find at least one question from this article. So इस आर्टिकल को समझना और इस आर्टिकल की डेटा को याद रखना बहुत important है. So I am going to tell you some important tricks to understand that data, and once you understood that data with the help of tricks, then you can solve any of the question in your exams without even utilizing that trick. अगर आप इस ट्रिक को एक बार सुन लेते हैं और उसके बाद आप कुछ पास्ट ईयर पेपर्स देख लेंगे या कोई प्रैक्टिस पेपर अगर देख लेंगे या कोई ऑब्जेक्टिव को अगर सॉल्व कर लेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगी. आफ्टर दैट यू विल नॉट बी नीडिंग दैट थिंग एट द टाइम ऑफ योर फाइनल exam. Okay, so the things are very light things, but at least you have to memorize them before your examination. Okay, because they are not that easy to, because you have to shuffle the number. To understand and to learn the data is obviously a very difficult task. So you will have to shuffle the number. Now, since we are going to talk about the loss of biodiversity, here loss simply means the loss of a species. We know very well that during the human evolution or during the generation of life, जब पहला living cell बना था उसके बाद there is speciation and we can say diversification. There is creation of a lot of species which fulfilled this earth with a lot of diverse creatures. लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ तो ह्यूमन की एक्टिविटीज ने जो है स्पीसीज को हार्म करना स्टार्ट कर दिया, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिकॉज ईदर वी आर हार्मिंग द स्पीसीज देमसेल्फ और वी आर हार्मिंग द रिसोर्सेज ऑन व्हिच द स्पीसीज इज ड्वेलिंग. तो ऑब्वियसली अगर आपको एक चिड़िया है जो पेड़ पर रहती है, अगर आप उस पेड़ को काट दोगे देन यू आर ऑब्वियसली हार्मिंग दैट बर्ड विदाउट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसिंग द बर्ड. ओके, सो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस दैट ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज देयर इज लॉस इन द स्पीसीज एंड द formation of species is obviously due to the speciation, and after the speciation there is also diversification. Okay, so that the diverse group of organisms. Hello friends, and welcome back to another video from Ex-situ Biology Tutorials. In this video we are going to talk about some very important data. Sacred group. Sanctuary and Biosphere Reserve. How do we conserve biodiversity? How do we conserve biodiversity? When we conserve and protect the whole ecosystem, its biodiversity at all level is protected. Whole ecosystem, conserve and protect whole ecosystem. कंजर्व एंड प्रोटेक्ट होल इकोसिस्टम. मस्त फिलहाल भी फाइन होला शायद. होल इकोसिस्टम, its biodiversity at all level is protected. We save the entire forest to save the tiger. Okay, when we conserve and protect whole ecosystem, biodiversity level is okay. Biodiversity level is
level of biodiversity protected. Conserve and protect whole ecosystem, all level of biodiversity. All level of biodiversity protected. This we save the entire forest to save the tiger. Tiger like bachon ko lagi hum lele forest. This approach is called in-situ, on-site conservation. However, in-situ conservation. Tigers again. Conservation and protect whole ecosystem. At all level of biodiversity protected in-situ conservation. Okay, however, when there are situations where an animal or plant is endangered and threatened and need urgent measure, men extinction, threatened. 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 Offsite conservation. Offsite conservation. In-situ conservation. In-situ conservation. On-site. Faced with the conflict between development and conservation, many nations find it unrealistic and economically not feasible to conserve all the biological wealth. Invariably, the number of species waiting to be saved from extinction far exceeds the conservation resources available. On a global basis, this problem has been addressed by eminent conservation. They identified for maximum protection certain biodiversity hotspot region with very high level of species richness and high degree of endemism. Diversity hotspot. Biodiversity hotspot. Very high level of species richness. Richness.
high degree of endemism. Endemism. Astaghfirullah. Endemism. Endemism. That is a species confined to that region, not found anywhere else. That is species confined to that region and not found anywhere else. Endemism. Species confined to that region and not found anywhere else. Initially, 25 biodiversity hotspots were identified, but subsequently 9 more have been added to the list, bringing the total number of biodiversity hotspots in the world. Twenty-four plus 25 plus 9, 34. These hotspots are also reason of accelerated habitat loss. Hotspots are also reason of accelerated accelerated habitat loss. Habitat loss reason. Habitat hotspot are accelerated habitat loss. Hotspot are accelerated reason of habitat loss. Three of these hotspots: Western Ghats, Sri Lanka, Indo, Burma, and Himalaya. Three of these hotspots cover our country exceptionally high biodiversity reason. Three hotspots of our country, India. The Himalayas, Western Ghats, and Indo-Burma region. Hotspot of India. Three biodiversity hotspot of India. Western Ghats and Sri Lanka. The Himalayas. Western Ghats and Himalayas. The Himalayas and Indo. Who knows? The biodiversity hotspots of India, Western Ghats and Sri Lanka, Indo-Burma and Himalayas cover our country exceptionally high biodiversity reason. Countries exceptionally cover our country's exceptionally high biodiversity reason. Although all the biodiversity hotspots put together covers less than 2% of Earth's land area,
Biodiversity. Hotspot covers 2% of Earth's total area. Cover up. The number of species they collectively harbor is extremely high. Extremely high. And strict protection of this hotspot could reduce the ongoing mass. Okay. Strict protection. These hots reduce mass extinction by almost 30%. Strict protection of this hotspot can reduce mass extinction by almost 30%. In India, ecologically unique and biodiversity rich regions are legally protected as Biosphere Reserve, National Park, and sanctuaries. In-situ, sacred groves, National Park, Wildlife Sanctuary. है वाइल्ड सेंचुरी इन सिटू में. Let's see. Biosphere Reserve, National Park, Wildlife Sanctuary. National Park, Wildlife Sanctuary. India has also a history of religious and cultural traditional that emphasizes protection of nature. In many cultures, tract of forests were set aside, and all the trees and wildlife within were venerated and given total protection. Such sacred groves are found in Khasi and Jansai Hill of Meghalaya. Okay. Biosphere Reserve. Yeah, Biosphere, BHRE, Biosphere Reserve, RESERV, Biosphere Reserve, National Park, Biosphere Reserve, National Park. National Park, Wildlife Sanctuary. Biosphere Reserve, National Parks,
sacred groves. BN. In-situ. Veena. Biosphere Reserve. Oh, nice. We'll do it, okay. Veena is scared of wildlife sanctuaries. Wildlife safari. Center. Scared of wildlife. Wild center. Pond. Biosphere Reserve. National Park. Scared. Scared of hotspot. Biodiversity hotspot, right? Types of in-situ conservation.
In-situ conservation focuses on protecting species in their natural habitats. This includes establishing protected areas like national parks, wildlife sanctuaries, biosphere reserves, and sacred groves. Other approaches involve habitat conservation and conserving the genetic resources of species within their natural populations. Types of in-situ conservation. 1. Protected areas. National parks. Strictly protected areas where human activities are. Biodiversity hotspot. A region with a high concentration of endemic species. Is it part of in-situ conservation? But what are priority areas of in-situ conservation? Okay, focus on protecting Bina. Biological research. No, biological, biological होता biological research, reserves. ना biological, biosphere reserve रहे biosphere reserve, national parks, biosphere reserve, national park, wildlife sanctuaries along with sacred groves, okay, sacred groves, biosphere reserve, national parks, wildlife sanctuaries and sacred groves, biosphere reserve, national parks, wildlife sanctuary and sacred groves, biosphere reserve, Bina, biosphere reserve, na, national park, Tandiki Bina is scared, sacred groves, scared of Santa, wildlife sanctuary in hotspot, biodiversity hotspot, okay, biosphere reserve, 14 biosphere reserve, okay. India has now 14 in India, okay, 14 national parks, 14 biosphere reserves, 14 national parks, 90 wildlife sanctuaries, 448 like wildlife sanctuaries, 14 biosphere reserve, protected area that promote the conservation of biodiversity, sustainable development and research while fostering a balanced relationship. Biodiversity. Biosphere reserve, 14 biosphere reserve. A biosphere reserve. Biosphere reserve एउटा भयो हैन, त्यहाँदेखि अर्को के छ भने त 448 wildlife sanctuaries along with 90 national parks. 90 national parks, 448 wildlife sanctuaries. That means sacred groves and national parks and wildlife sanctuaries. Wildlife sanctuaries in India are protected areas established for the conservation of flora and fauna, villages and other area of interest. Wildlife sanctuaries, okay, wildlife sanctuaries. हजुर ये लोग
हजुर नोट्स बनाउँदैछु एकछिन है म अघि बाहिर निस्केको थिएँ तपाईँलाई देखिनँ तर हजुर अघि म बाहिर निस्केको थिएँ कि तपाईँलाई देखिनँ ए म यहाँ थिएँ नि तल्लोपट्टि हुनुहुँदो रहेछ नि है म माथि हेरेको थिएँ कि जिके छ त पैसा ए भन्दैछ ए मेरो फोनै झ्याप्पै गएर कि कहाँतिर अब देखाउनु पर्छ बनायो अरे कि अन्त त्यो पैसा जिपे गरिदिनु पऱ्यो अन्त त्यो भनेको कि मेरो त्यो फोनमै जिपे छ कि अन्त मेरो आमाको ट्याक्स छ होला ट्याक्स होस् ट्याक्स छ नि कि अहिले प्रोग्राम तिमी जिपे गरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्दैछु नि क्यास त छ नि पैसा के भन्छ कि दादाले जिपेमा गरिदिनुहुन्छ कि तर म त्यो कामको बाँकी मेरो फोन किन त्यो अहिले फोनहरू चाहिँ अपडेट गरिबस्नु पर्छ है किन यस्तो होइन अपडेट गरिबस्नु भने पनि झ्याप्पै जाँदा पनि फोन मेरो त झ्याप्पै गएर चाहिँ डल्लै अपडेट गरेर दिदीको अब एउटा के फोटो सोटो पनि गर्दैन कि डल्लै उयो गरेर पनि दिँदैन त्यस्तो भन्छ ल्यान्ड अब के भन्ने अब त्यही त के भन्ने पैसा दिने लेख्नु ट्राई त्यस्तो भन्ने है झन् क्यास छ कि हुन्छ त्यसो भए हाम्रो अङ्कलले पनि गरिदिनुहुन्छ तपाईँलाई जस्तो गर्छु क्यास छ कि छैन त मेरो फोनै जिपे पर छ हो हजुर त्यसपछि अहिले दिँदा चाहिँ म अहिले भएर गर्छु भन्ने उयो हुँदैन नि त नि मान्दैन अनि त्यसै भन्दै जस्तो होइन के भन्दाखेरि Sacred groves. Found in Khasi and Jansai. Khasi and Jansai. Hills in Meghalaya. Meghalaya. Khasi के जैसे Khasi and Jaintia. Khasi and Jaintia hills of Meghalaya. Aravalli hill. Aravalli. Hills of Rajasthan. Khasi and Jaintia. Khasi and Jaintia hill of Rajasthan. Khasi and Jaintia hill of Meghalaya. Aravalli hill of Rajasthan. Western Ghat region of Karnataka. Western Ghat. Karnataka. Maharashtra. Western Ghat region of Karnataka and Maharashtra and the Sarguja. Karnataka and Maharashtra. Sarguja, Chanda and Bastar areas of Madhya Pradesh. Western Ghat region of Western Ghat is a part of Maharashtra or Karnataka. Western Ghat is known as Sahyadri Mountain, Maharashtra, Goa and Karnataka. दोनों में नहीं है. Okay, Western Ghat region of Karnataka and Maharashtra. Maharashtra. No, Karnataka and Maharashtra and the Sarguja, Chanda, Bastar areas of Madhya Pradesh. Sarguja, Chanda and Bastar.
areas of Madhya Pradesh. MADHY Madhya Pradesh. Pradesh. Okay. Sacred groves. Khasi and Jansia Hills of Meghalaya, Aravali Hill of Rajasthan, Western Ghats of Karnataka and Maharashtra, Sarguja, Chanda and Chanda or Chanda, I don't know. B Batakicha, Bastar areas of Madhya Pradesh. Bastar. Is it Bastar? या फिर बास्टार? इंडियंस के ना हमें खुद का ही नहीं बताता है, गलत गलत प्रोनाउंस करो, सही है ये. Sarguja, Chanda and Bastar areas of Madhya Pradesh. In Meghalaya, the sacred groves are the last refuges for a large number of rare and threatened plant. Okay. Jansia, Jensai है ना, Jensia, Khasi and Jensia Hill of Meghalaya, hills in Meghalaya, Khasi and Jensia. Khasi and Jensia Hill of Meghalaya. Karnataka Maharashtra ma Western Ghat. Then Madhya Pradesh ma Sarguja, Chanda and Bastar. One more is there. Aravali Hill in Rajasthan. This is in-situ. Okay. Conservation and protection. Conservation and protection, whole ecosystem. Protection of whole ecosystem. Conservation and protection of whole ecosystem. All level of biodiversity protected. In-situ conservation. Save forest to save tiger. Urgent होता है ना, ये urgent. Urgent requirement to save it from extinction. Endangered or threatened. Ex-situ off-site conservation. In-situ on-site conservation. Okay. Ex-situ off-site conservation to save from extinction endangered or threatened species. Urgent requirement to save from extinction endangered or threatened species is off-site. Take out from their natural habitat. Take out from their natural habitat. Take out from their natural habitat and placed in a setting where they can be protected and given special care. In-situ conservation and ex-situ conservation. Ex-situ conservation. In this approach, threatened animals and plants are taken out from the natural habitat and placed in a special setting. Off-site conservation. Off-site conservation. It's okay, ma. Threatened animals and plants. THREATN. Threaten. Okay, in-situ. Bina. So, okay, Bina is scared of wild Santa in hotspot. In hotspot. In का मतलब ये in वाला क्या होता है इससे? In-situ. Okay. In-situ. Bina Reserve. Biosphere Reserve. Biosphere Reserve. RESERE. Reserve. Bina. National Park. NATION. National Park.
Rina is scared. SCERD, scared. That is sacred group. GROS, scared of wild. Santa. Wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary. Wild Santa. Wildlife sanctuary in hotspot. In hot. Biodiversity hotspot. Okay, that's it. Threatened animals, threatened animals, threatened animals, and plants. Plants are taken out from their natural habitat, natural habitat, from the natural habitat, and placed in spatial setting. Spatial setting where they can be protected. ये ना खुद स्क्रॉल होने लगा अब क्यों होता है इसका ऐसा Off-site conservation. Threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in spatial setting for protection, where they can be protected and spatial setting. Okay. Zoological park, botanical garden, wildlife safaris. Safari park, zoological park, botanical. Okay, zoological park, zoo, botanical garden, wildlife safari park. Solve this proposed. Wildlife safari park, zoological park, zoological park, parks, wildlife safari park, botanical garden, botanical garden. There are many animals that have become extinct in the wild but continue to maintain in zoological parks. In recent years, ex-situ conservation has advanced beyond keeping threatened species in enclosure. Now, gametes of threatened species can be preserved in viable and fertile condition for long period using cryopreservation technique. Eggs can be fertilized in vitro and plant can be propagated using tissue culture method. Cryopreservation. Gamete of threatened species. Cryopreservation. Cryopreservation of threatened species. THREAT, threatened, THREAT. Threatened species. Astaghfirullah.
Preservation of threatened species. क्रायो प्रिजर्वेशन में क्या कर सकते हैं हम लोग? इसमें से हम लोग गैमेट प्रिजर्व, gamete preserve. Yo, I can't do this. It's okay, you have to. Gamete of threatened species can be preserved in viable and fertile condition. Then one more is there, cryopreservation. Okay, seed of different genetic strains of commercially important plant can be kept for long period in seed bank. Seed bank. Seed of genetic strain, different genetic strains, STRAINS strains. इतना आलसी इंसान हो गई हूँ मैं, क्या बोलूँ? Strains of commercially important plants can be kept for long period in seed bank. Wildlife safari. Will save. Zoo will save boat. Zoo will save boat sinking. Don't cry. Zoo will save boat from sinking. Zoo. This is trick, okay? Zoological parks. Wildlife what is it? Safari. Oh, safari. Katti boli mere se safari park. Wildlife safari park. Parks. Boaters. Sinking. Cryopreservation. Boat. Botanical gardens. 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 Zoo will save wildlife safari parks from sinking. That is seed bank. Ex-situ को क्यों? Zoo will save a boat from sinking. Don't cry. Zoological park will save wildlife safari parks. Wildlife safari parks. Boat. Botanical garden बंदा अपनी भाई बुझियो. From sinking. Seed bank. ये ना ब्लिंग करेगा. मुझे नहीं पता कि वो इतना ज़्यादा ब्लिंक करता है ये. इसको निकाल देती हूँ मैं. शायद ना करे.
8% ये चार्ज भी यार। Ex-situ conservation. Threatened animals and plants are taken out from their natural habitat and placed in spatial setting, protection and spatial care. Okay, ex-situ conservation. Zoological park. Zoo will save wildlife safari parks, zoological parks, wildlife safari parks, and then zoo will save botanical garden from sinking. Seed bank, don't cry. Cryopreservation. Wildlife safari parks, zoological parks, botanical garden, cryopreservation of threatened species technique, gamete preservation, cryopreservation, gamete preservation, seed bank, seed of different genetic strain, different genetic strain, different genetic strain, seed of different genetic strain. Seed of different genetic strain. उल्टा लाइन चिपका दिया मेरे ऊपर भाई साहब। In-situ conservation, on-site conservation. Okay, on-site conservation माची की क्यों जाना था? बीना, B, Biosphere Reserve, बीना, नाबरा National Park, Biosphere Reserve, National Park. Bina is scared. Sacred groves of wild Santa, wildlife sanctuary 4. Okay, along with hotspot, biodiversity hotspot, biosphere reserve 14, national park 90, wildlife sanctuary 448 sacred groves. Okay. Biosphere reserve, sacred groves, wildlife sanctuaries, biodiversity hotspot, in-situ. Okay. In-situ conservation. In-situ conservation. In-situ conservation. Zoological parks, wildlife safari parks, botanical gardens, seed bank, cryopreservation technique. Biological parks, zoo देखिए, zoological park, wildlife safari parks, botanical garden, seed bank, cryopreservation technique.
Biodiversity knows no political boundaries, and its conservation is therefore a collective responsibility of all nations. The historic Convention on Biological Diversity, the Earth Summit held in Rio de Janeiro in 1992. इसको क्या हो जाता है, खुद ही ऊपर नीचे होता रहता है. Studying or just preparing for some test. मुझे ना इसका टच पैड ही खराब है ऐसा लग रहा है. Earth Summit. Historic Convention of Biological Diversity, the Earth Summit. ARDH, Earth Summit, the Earth Summit. Summit, the Earth Summit. Biological Diversity, Historic Convention on Biological Diversity, Diversity, Earth Summit in 1992. ये और भी याद करना है. 1992, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro in 1992. Called upon all nations to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable utilization of its benefits. You catch on Brazil, right? Rio, Brazil. BREZIL. Brazil, 1992. 1992. Okay. Conservation of biodiversity. Conservation of biodiversity. Conservation of biodiversity. Conservation of biodiversity. Biodiversity knows no political boundaries, and its conservation is therefore a collective responsibility of all nations. The Historic Convention on Biological Diversity. The Historic Convention of Biological Diversity, the Earth Summit, Rio de Janeiro, I don't know how to pronounce this word, called upon all nations to take appropriate measures for conservation of biodiversity and sustainable development. Sustainable development, okay. Sustainable development. In 2002, this is World Summit. First is Earth Summit, then World, World Summit. World Summit. World Summit. World Summit on Sustainable Development. 2002. World Summit on Sustainable Development. Biodiversity. World Summit. Okay, South Africa. John, John, Johannesburg, South Africa. 190 countries pleased their commitment to achieve by 2010 significant reduction. 2002 okay. 190 countries pledged their commitment to achieve. स्लॉट कौन सा कंप्लीट हो गया? आई थिंक स्लॉट 4 कंप्लीट हो गया. countries pleased their commitment to achieve by 2010.
commitment to achieve by 2010 a significant reduction in current rate of biodiversity loss. Reduce biodiversity loss at global, regional and local level. Global, local or regional. Held region, Johannesburg, South Africa. World Summit. Warsaw. Ria. Earth Summit, Rio de Janeiro, 1992, right? 2002, 1912, 2002, 20 वर्ष बाद में, okay? South Africa, Johannesburg, South Africa, 190 countries. Pledged the commitment to achieve by 2010 a significant reduction in the current rate of biodiversity loss at global, regional and local level. Okay, got it. Got that Butikito. Did you got that Butikito? I didn't got that Butikita. Got that Butikita. Shut up, Ima, shut up. I wish I could. I wish we all could. फिर से कॉफी खाए कि पिए हो? पिए होता है शायद, मैंने गलत बोला, मैं मानती हूँ मैंने गलत बोला. गुटनबर्ग, मार्क गुटनबर्ग, गटा गुटनबर्ग नहीं, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने का दिल है, लेकिन कॉफ़ी नहीं पिया अभी, कोई बात नहीं. मेरा ना प्रेयर है तो मैं प्रे करने जा रही हूँ. The Earth Summit, the World Summit, दुईटा समिट वापस. ओके, I'll go. ओके, मैं आ जाऊंगी वैसे तो 5 मिनट जितने में, 5 मिनट से थोड़ा ज़्यादा लगेगा. प्रे करती हूँ. So before you go,
इतनी स्टडीज मत करो, हेल्थ का भी ध्यान रखो। अबे हाय अल्फा, मैं ना कॉफी लेके आती हूँ। ओके, मैंने आज भी बहुत सारा कॉफी पी लिया कि अब मुझे रात को नींद नहीं आएगा।
अगर तुम्हें लगता है कि तुम कर सकते हो तो तुम्हें करना चाहिए आर्टिफैक्ट्स। और जिस तरह से तुमने बोला ना, तो आई थिंक तुम कुछ ना कुछ तो बन गए होगे। तुमने भले ही एमबीबीएस नहीं लिया होगा, बाकी कोई तो कुछ तो लिया होगा, तभी तो तुमने लिखा झोला छाप डॉक्टर। कोई बिना पढ़े डॉक्टर तो नहीं बनता। तुम कौन से ब्रांच पे हो? एनी सजेशन प्लीज, आई एम इन क्लास 10th। सब लोग बोलते हैं कि क्लास 10 की मार्क्स मैटर नहीं करता, लेकिन करता है। सब लोग झूठ बोलते हैं। तो पढ़ो तुम भी। अल्फा ऐसे तो मैं आपको शेड्यूल नहीं बता सकती, लेकिन अगर आप हम लोगों के साथ पढ़ना चाहते हो ना, तो हम लोग हमेशा यूट्यूब पे ही रहते हैं। और भी है हम लोगों के फ्रेंड, जैसे एक शुभम तो हमेशा होता है ना, बाकी और भी है। तो हम लोगों के साथ पढ़ सकते हो रात में, जब तुम स्कूल से वापस आओ तब। मैं कॉफ़ी लेके आती हूँ। हाँ, फिर 30 आवर का ना, 30 आवर 30 मिनट का करके ना मैं क्लासेस चली जाऊँगी 4 से। कुलसा, व्हाट इज कुलसा? भाई मुझे इतना हिंदी नहीं आती है, थोड़ा थोड़ा ही आती है। हाय यम। सो विच लैंग्वेज? क्या ही करोगे जान के, वो तुम्हारे बोर्ड्स में नहीं आता। कुलसा का मीनिंग ना शायद आलसी होगा, या फिर हाँ आलसी ही आलसी आ रहा, ऐसा ही बोला होगा। तुम्हें ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुमने बन के दिखा दिया। इट्स ओके। पढ़ाई करते हो क्या? 30 मिनट का स्लॉट रखती हूँ मैं, 4 पे चली जाऊंगी। गुड लक एवरीवन, गुड लक शुभम। गुड लक निशांत। तो ये भूल जाते हो ना बीच बीच में, निशांत भाग जाते भाई हो। आज तो मैंने कॉफी पानी की तरफ पी लिया। Genetic diversity, species diversity, and ecological diversity, biodiversity. In our biosphere, immense diversity or heterogeneity exists.
heterogeneity exists not only at species level but all levels of biological organization, ranging from macromolecules within cells to biomass. Biodiversity is the term popularized by the sociobiologist Edward Wilson. भाग नहीं जाता, लेक्चर देखता हूँ। हाँ, मेरे लिए तो भाग ही जाते हो ना, तुम्हारे लिए तो तुम पढ़ रहे हो। Biodiversity is the term popularized by sociobiologist Edward Wilson. मेरा नहीं होता, किसका होगा? जो पढ़ रहे हैं उनका होगा। मैं चैट्स ऑफ कर दूं? I am from Sikkim. Sociobiologist Edward Wilson. Biodiversity. मुझे AIR1 के बारे में सोच के ना बहुत बुरा लगा। Biodiversity. Edward Wilson. Edward Wilson. हाँ सही बोला, 1 मिनट रुको। हाँ कर रही हूँ, कर दिया। Biologist, biodiversity term Edward Wilson. Biodiversity Edward Wilson. Okay, in our biosphere, immense diversity or heterogeneity exists not only at the species level but at all levels of biological organization, ranging from macromolecules within the cell to biomes. Biodiversity is the term popularized by the sociobiologist Edward Wilson. Biodiversity, Edward Wilson, to describe the combined diversity at all level of biological organization, the most important of them. Biodiversity, to describe the combined diversity at all the levels of biological organization. The most important of them are genetic diversity, species diversity, and ecological diversity. Genetic diversity. A single species might show high diversity at the genetic level over its distributional range. A single species might show high diversity at the genetic level. A single species might show high diversity at the genetic level over its distributional range. The genetic variation shown by the medicinal plant Rolfia vomitoria growing in different Himalayan ranges might be in terms of potential concentration of the active
genetic diversity. Rowolfia vomitoria. Rowolfia. Rowolfia vomitoria. Rowolfia vomitoria. Rowolfia vomitoria. Growing in different Himalayan ranges might be in terms of potency and concentration of the active chemical reserpine. The genetic variation shown by medicinal plant Rowolfia vomitoria growing in different Himalayan region might be in terms of potency and concentration of active chemical reserpine. Reserpine. Active chemical reserpine. Active chemical reserpine. Rowolfia vomitoria. Active chemical reserpine. The genetic variation shown by the medicinal plant Rowolfia vomitoria growing in different Himalayan range might be in terms of potency and concentration of the active chemical reserpine that the plant produces. Excuse me. Medicinal plant reserpine. Plant PLA plant. Okay. A single species might choose high diversity. Single species might choose high diversity at genetic level. High diversity at genetic level. Single species. Single species. Says high diversity at genetic level. Genetic diversity. Single species. High diversity at the genetic level. High diversity. Genetic level. Single species. Automata species. Genetic level. No high diversity. It's weird. Genetic diversity, Biodiversity, Edward Wilson to describe combined diversity at all level of biological organization. The most important of them are genetic diversity. A single species might choose high diversity at the genetic level over its distributional range. The genetic variation shown by medicinal plant Rowolfia vomitoria. Active chemical, okay. Genetic diversity shown by medicinal plant Rowolfia vomitoria. Growing in different Himalayan ranges might be in terms of potency and concentration of active chemical reserpine. That the concentration of reserpine, active chemical reserpine. Concentration of reserpine, okay. Reserpine. Concentration of reserpine.
that the plant produces. India has more than 50,000 genetically, okay, 50,000 different strain of lice, genetically different strain of lice. 50,000 genetically different strain of rice. Strain of rice. Genetically different strain of rice. $50,000 genetically different strains of rice. 1,000 varieties of mango. India has more than 50,000 genetically different strain of rice and 1,000 varieties of mango. Okay, 50,000 variety of rice and 50,000 genetically different strain of rice and 1,000 varieties of mango. Rolfia vomitoria. Genetic diversity. Genetic diversity. Then we have species diversity. The diversity at a species level. For example, the Western Ghats have a greater amphibian species diversity than Eastern Ghats. Species diversity. Diversity. Species diversity. WESTM. Western Ghats. More amphibians. More amphibian species. Greater amphibian species. Amphibian diversity and Eastern Ghat. Species diversity. Western Ghat has more amphibians diversity. Western Ghats has more or greater amphibian species diversity than Eastern Ghats. Okay. Your species diversity, okay? The diversity at species level, for example, the Western Ghats have a greater amphibian species diversity than Eastern Ghats. Ecological diversity at the ecosystem level. India, for instance, with the desert, rainforest, mangroves, coral reefs, wetlands, estuaries, and alpine meadow, has a greater ecosystem diversity than a Scandinavian country like Norway. Ecological diversity मुझे ये देखना है. Coral reef. Underwater ecosystem, okay. Underwater. Wetland. Wetland is an area of land where water is present at or near surface or a part of the year. A wetland is an area of land where water is present or near the surface for part or all of the year. Okay. Wetland, can you देखिए corals, mangroves, forest is a shrub, trees and shrubs that thrives in coastal, saline or brackish water. Mangroves. Those are mangroves. Ecological diversity. Ecological diversity. Edward Wilson, biodiversity
important type: genetic diversity, species diversity र ecological diversity. Ecological diversity में के छ India, for instance, with desert rainfall or rainforest, desert rainforest, mangrove, etc. वैसे तो ये लिखने के लिए बहुत कुछ. कोरल रीफ, वेटलैंड, एस्चुरीज, अल्पाइन मीडो भी देख लेते हैं ना. अल्पाइन मीडो, हाई अल्टीट्यूड, ओके, ग्रासलैंड. It has taken millions of years of evolution. It has taken millions of years of evolution to accumulate this rich diversity in nature. मैंने इसका ना कल गलत आंसर किया था. Millions of years of evolution, तभी जाके diversity in nature, rich diversity in nature. मैंने इसका गलत किया कल. It has taken millions of years of evolution. Millions of years of evolution. Millions of years of evolution. It has taken millions of years of evolution to accumulate rich diversity in nature. Rich accumulation. In nature. Millions of years of evolution, rich diversity in nature. But we could lose all of that wealth in less than 2 centuries if the present rate of species loss continue. Biodiversity and its conservation are now vital environmental issue. Biodiversity and conservation are now vital environmental issue of international concern as more and more people around the world begins to realize the critical importance of biodiversity for our survival and well-being on this planet. 2 centuries. Okay, अब को 200 वर्षमा. Million of years evolution, rich diversity in nature. Robert me. Global species diversity. Robert me. Global species diversities. Global global species diversities. Species diversity. Global species diversity. Robert me placed the global species at 7 million. IUCN, International Union of Conservation of Nature and Natural Resources. Total number of plant and animal described so far slightly more than 1.5 million. Robert May places the global species diversity. 7 million. Robert May global species diversity at about 7 million. IUCN लिखा तो लिख सकते. IUCN 2004. The total number of plant and animal species. IUCN 2004. Plant and animals species. $1.7 million. 1.7 and 1.5 million. 1.5 million, okay. 7 million से बोले बनिए रोबोट मिली.
Global species diversity. How many species are there on Earth and how many? Since there are published records of all the species discovered and named, Union for Conservation of Nature and Natural Resources. We know that how many species in all have been we know how many species in all have been recorded so far, but it is not easy to answer the question of how many species are on Earth. According to IUCN 2004, the total number of plant and animal species described so far is slightly more than 1.5 million, but we have no clear idea of how many species are yet to be discovered and described. Estimates vary widely, and many of them are only educated guesses. For many taxonomic groups, species inventories are more complete in temperate than in tropical countries. Considering that an overwhelming large proportion of the species waiting to be discovered are in the tropics, biologists make a statistical comparison of the temperate tropical species richness of an exhaustively studied group of insect and extrapolate this ratio to other group of animals and plants to come up with a gross estimate of total number of species on Earth. Some extreme estimates range from 20 to 50 million, but a more conservative and scientific sound estimates made by Robert May place the global diversity at about 7 million. 20 to 50 million. 7 million. Let us now look at some interesting aspect about Earth's biodiversity based on the currently available species inventories. More than 70% of the species recorded are animals, while plants including algae, fungi, and bryophytes, algae, fungi, bryophyte, gymnosperm, and angiosperm comprises no more than 22% of the total. आई थिंक अब मुझे जाना चाहिए ना, 7 मिनट ही है. मैं आके पढ़ती हूँ, अभी मैं चली जाती हूँ. फाइव मिनट ही तो है, पढ़ना चाहिए वैसे. टाइमर को पॉज कर देती हूँ. ये लो चैट ऑन कर दिया मैंने. बाय. आई ज्वाइन नाउ. अभी तो मैं जा रही हूँ ना क्लास 4 से. अब मैं सोच रही थी कि मैं स्ट्रीम ऑफ कर दूँ. बाय बाय निरी. तुम्हारे लिए छोड़ के जाऊँ या फिर तुम पढ़ लोगे कहीं से?
तुमने कुछ बोला नहीं, आई थिंक तुम कहीं और से पढ़ लोगे. ओके बाय. शुभम, आर यू देयर? शुभम, आई थिंक उसने म्यूट किया है या फिर वो सेशन गया. निशांत भी नहीं है ना? निशांत, आर यू देयर? I'll come back at 5. Bye, Avinav. You were studying with us. Okay, then I'll go. I'll come at 6. Okay. Okay. Bye.